हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग इंजीनियर में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन मोड। देयर आर थ्री मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। द फर्स्ट वन इज कंडक्शन, सेकंड इज अ कन्वेक्शन एंड थर्ड इज अ रेडिएशन। सो आज हम हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन पढ़ेंगे। हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन में जो हमारा फर्स्ट लॉ आता है उसे हम बोलते हैं फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शंस को डिफाइन करने के लिए, उसके लॉ को स्टेट करने के लिए हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं। कंडक्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस अंडर द स्टेडी कंडीशन। मीन्स जो मेरा हीट टेक्स प्लेस है, जो मेरा हीट ट्रांसफर हो रहा है वो अंडर द स्टेडी कंडीशन होगा। सेकेंड, द हीट फ्लो इन यूनी डायरेक्शनल। जो मेरा हीट है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। The temperature gradient is constant and the temperature profile is linear. There is a no internal heat generation. Means जो हमारा वॉल है जिसके थ्रू कंडक्शन हो रहा है, जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है थ्रू अ कंडक्शन मोड, वो उसमें मेरा इंटरनली हीट जनरेट नहीं होगा, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। द मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। मीन्स द मटेरियल का जो थर्मल कंडक्टिविटी होता है वो कांस्टेंट रहेगा इन एनी डायरेक्शनल। Last one, the bonding surface is isothermal in character. Fourier's law of heat conduction. Basically मैंने एक वॉल ड्रॉ किया है, उसका एक साइड में टेम्परेचर T1 है, अनदर साइड में टेम्परेचर T2 है। T1 मैंने हायर टेम्परेचर को डिनोट किया एंड T2 मैंने लोअर साइड टेम्परेचर को डिनोट किया है। सेकेंड, जो मेरा ओरिजिन है ऑफ वॉल उसको मैंने x1 से डिनोट किया है, और जहाँ पे मेरा वॉल फिनिश होता है, एंड होता है एट अ डिस्टेंस ऑफ l, उसको मैंने x2 से डिनोट किया है। सो फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रूइंग अ सिंपल होमोजीनियस सॉलिड, ये मेरा एक सिंपल होमोजीनियस सॉलिड है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ दिस सेक्शन एट अ राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ heat flux and to the change in temperature with respect to length of path of heat flow. Means what? Basically it states that the flow of heat through a simple homogeneous solid is directly proportional to the area of the section। यहाँ पे मैं इसको स्लैब बुलाऊँ तो स्लैब स्लैश स्लैब at right angle to the heat flow and to the change of temperature with respect to the length of the path of heat flow. It states that the flow of heat through a simple homogeneous solid is directly proportional to the area of this slab at a right angle to the direction of heat flow to the change in temperature with respect to heat flow. Means what? The Q is directly proportional to the area of a slab into change in temperature with respect to its length, that is dx. Therefore Q is equals to माइनस, यहाँ पे मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसको हम हटाएंगे तो यहाँ पे मैं लिखूंगा K इंटू A इंटू dt बाय dx, where K is called as a thermal conductivity of a material, और यहाँ पे मेरा स्लैब है, therefore thermal conductivity of this slab. A stands for area of slab, dt stands for temperature difference, and dx stands for distance travel by this temperature or travel by a heat flow.
Negative sign indicates that there is a change in temperature from high temperature region to low temperature region. So this is called Fourier's law of heat conduction. Now I am writing all the things here, like where Q is a heat flow through a wall section or through a body per unit time. Its unit is watt. Second, A is a surface area of slab. This area of slab, or we can say the surface area of heat flow also, or surface area of heat flow. We know the unit of area, that is meter square. Surface area of slab और surface area of heat flow, basically जितना slab है उसी के through heat flow हो रहा है in a unidirectional. Next one is a dt, that is a temperature difference of the block or a slab. I am writing here face of block because यहाँ से यहाँ पे temperature difference हो रहा है. And dx, basically we can say it is a thickness of the body which is in the direction of flow or in the direction of heat flow. We can say heat flow. Its unit is in terms of meter. यहाँ पे मेरा dx का वैल्यू है L, तो we can write here dx is equals to L. And the last one is called K, that is constant of proportionality, or it is also known as a thermal conductivity of the material or of a body.